Hi guys, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सारा and welcome to my channel। आज हम यूज़ कर रहे हैं a variety of different Pakistani only brands। Everything apart from the brow gel is all Pakistani makeup या पाकिस्तान में available makeup। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये लोग मैंने कैसे करा है और कौन से पाकिस्तानी brands यूज़ करे हैं तो देखते रहिए। अच्छा, तो स्किन के लिए मैं यूज़ करूँगी दो प्रोडक्ट्स। एक तो जो है ये ग्लो ब्यूटी का प्राइमर एंड देन लग्जोरियन इंटरनेशनल सिल्की फील मैट फिनिश सनस्क्रीन। तो इन दोनों चीज़ों से हम अपनी स्किन को सेट करेंगे, प्रेप करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। दिस इज प्योरली सिलिकॉन। माई स्किन इज गोना बी क्राइंग। ओह नो, व्हाट? Okay. Oh, it smells kind of nice. It has like a bit of a tinty yellowy color to it. तो eyebrows के लिए मैं यूज़ करूँगी J.Note का eyebrow kit और उसके अंदर जो पाउडर है हम वो यूज़ करेंगे आज। तो मैंने कंसीलर नहीं मंगवा। Well, I do have a concealer but it's a J.Note one। लेकिन आज मुझे कुछ डिफरेंट यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे ग्लैम गर्ल्स का ये पैलेट है और इसके अंदर जो इनका ये फेस बेस है वो मैं यूज़ करूँगी टू प्राइम माई आईज। अब हम करेंगे आई शैडो पैलेट यूज़ एंड आई एम गोना बी यूजिंग दिस ब्यूटिफुल काशीज पैलेट और इसका नाम है स्लीक एंड सिल्क पैलेट and has all these beautiful colors। और हम कुछ थोड़ा सा न्यूट्रल with a bit of shimmer करेंगे। हम यूज़ करेंगे ये शेड योर मैजेस्टी और ये मैं ट्रांजिशन के लिए यूज़ करूँगी। तो इसमें एक ये डुओक्रोम शेड है जिसका नाम है रेडवुड। इट्स ए डुओक्रोम। इट्स वेरी sheer, इट्स नॉट वेरी पिगमेंटेड। अब मैं लूँगी मेरा फ्लफी ब्रश और ये जो कलर सनसेट है इससे मैं थोड़ा सा और डीपन कर लूँगी अपनी क्रीज। अब हम लेंगे कलर सिंसियर और इससे मैं इनर कॉर्नर हाईलाइट करूँगी और ब्राउ बोन। अब आई डोंट हैव एनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट फॉर eyeliner आई थिंक, तो आई एम जस्ट गोना यूज माय Maybelline eyeliner व्हिच आई थिंक वुड डेफिनेटली बी अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो हम eyeliner कर लेंगे। लैशेस लग गई हैं। अब हम आ जाते हैं स्किन पर और मैं यूज़ करूँगी इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन बाय काशीज। नाउ दिस इज़ द कलर नंबर 3। मगर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी कि कौन सी अंडरटोन से कौन से शेड्स का क्या मतलब है, तो जो बिल्कुल बीच में कलर था वो मैंने ऑर्डर करा है। आई थिंक आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट आई ऑर्डर्ड बट दिस इज नंबर 3। इट लुक्स वेरी पिंक बट we'll see. It kind of works. Does it? करके देखते पहले। It is very pink. You can especially यहाँ पे तो ज़्यादा पता चल रहा है कि कितना पिंक अंडरटोन है इसका। I think ये buildable coverage है, medium to high coverage है ये I think. The shade actually I think is a right match but the undertone's not. I don't know which way I should have gone. Okay, तो ये हमारा हो गया है फाउंडेशन। अब हम आ जाते हैं कंसीलर पर और कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी J.Note और जो सेटिंग पाउडर वो भी मेरे पास काशीज का है और वो है नंबर 5। अब हम यूज़ करेंगे लशियस कॉस्मेटिक्स का ब्लश। Look at this color. That is so beautiful। इससे हम लेंगे योर मैजेस्टी एंड सनसेट। अच्छा, लिप्स के लिए मैं यूज़ करी हूँ जे ब्यूटी का ये है गुलाबी चिलर ग्लॉसी लिप टिंट। आई फॉरगॉट हाइलाइटर। तो ये मेरे पास है ग्लो हाइलाइटर बाय ग्लो ब्यूटी एंड दिस इज द शेड जूल। ओके, ओके जी, तो ये हमारा मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। मुझे ऑनेस्टली इतनी खुशी हो रही है कि इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं और पाकिस्तान में जो ब्रांड्स हैं मेकअप की वो इतनी अमेजिंग चीज़ें बना रहे हैं। आई एम एक्चुअली फीलिंग रियली happy and very proud. Inshallah, I'm going to be doing more Pakistani brand makeup looks. और yeah, I'm very happy with a lot of it. सिर्फ मैं ये कहूँगी कि अगर आप जैसे foundations or something on your website
just give a description and especially mention the undertone, because this is just the color was right, the undertone was not right. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बाय.